हो ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है। सवाल इसलिए नहीं उठेगा, सवाल तो नहीं, जरा सुन तो लीजिए ना, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मौजूदा सिस्टम क्या है, इस कानून को एक तरफ रख दीजिए, आप जरा तवज्जो दीजिए। जी जी, मौजूदा सिस्टम ये कि इस कानून को एक मिनट एक तरफ रख दीजिए जी। अब कौन सी अपील है ही नहीं ना। तो अब आप कह रहे हैं ये कानून जो आया है 99% खामियों और परपोर्टेड खामियों को दूर करने के लिए, वो इस लिहाज से बुरा है क्योंकि वो 1% केसेस जिसमें फुल कोर्ट होगा कोई अपील नहीं है। तो पहले तो फिर अगर आपका ये बात मान ली जाए तो आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आपकी बात में ये इम्प्लाइड है कि ये कानून दुरुस्त है। अब आप 1% के लिए भी अपील प्रोवाइड कर दें तो फिर ये निकलेगा, या तो आप कहेंगे कि जी 99% तो मसला सॉल्व हो गया, 1% का रह गया। मैं यही बात कहूंगा कि द मेयर फैक्ट दैट देयर इजंट एन अपील इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ केसेस would not make the law unconstitutional. And I'll tell you why. There may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant, because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. If we recognize appeals as being substantive, then that so-called arbitrariness that is being controlled, I don't see how it's being controlled. Because किसी को right मिलेगा, किसी को right नहीं मिलेगा. Again the question will be, ये कैसे decide होगा? Again we'll go looking and hunting for principles, कि कौन सा principle apply करें. So on the face of it, it means that either you can't ever constitute a full bench, you can't constitute a bench which is more than 7 or 8 members, that's it. You're not allowed to do that, because Parliament has said appeal honi chahiye. Aur appeal honi chahiye ka matlab hai that every order of the Supreme Court under 183 has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose कि अब full court बैठ गया तो सब अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ने केस सुन लिया. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. So यहाँ कैसे हम वो right ले लेंगे वापस and कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है क्योंकि हम सब बैठ गए. Mr. Faisal, if you look at to me it appears to be an intra-court appeal. Yes. So at the High Court, if the larger bench is constituted, there's yes. no intra-court appeal. Sir, so if there's a larger bench, there's no appeal. There are 3 restrictions on an appeal from a single judge in an intra-court appeal. अच्छा जी, इसमें एक और बात अगर आप मद्देनजर रखें, हम अगेन realm of conjecture, सिंगल बेंच इस वजह से जब डीबी सुनती है या 3 जज सुनते हैं तो इसलिए उसकी अपील नहीं जाती. लॉ रिफॉर्म itself provides an answer. The appeal provides where a single judge decides the question. जी मैं एक मिनट आप सर जी देखिए, हम कंजेक्चर समाज से भी बात कर सकते हैं. अब आप मुझे बताइए आखिरी इस फुल कोर्ट से पहले कौन सी फुल कोर्ट थी? आई थिंक 2015 सर. कितने साल गुजरे जी? 8 साल हो गए. तो हम उस केस के लिए सिर्फ फिक्रमंद हैं या हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद हैं? 2 बातें हो सकती है ना. एक तो पिछले के लिए हम फिक्रमंद हैं कि वो केस में वो जो 21वीं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट ऑफ अपील सलब हो गई और वो नहीं हो सकती है. ठीक है, ये एक मफरूजा हो सकता है. ठीक है. दूसरा है कि नहीं, हम पिछले के लिए फिक्रमंद हैं तो हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद. फ्यूचर की जब बात आएगी, जब एक्चुअल बात आएगी हमारे सामने, फिर हम अगर आप हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हम आपस में कुछ समझ लेंगे इसको. हमें ये तो नहीं बताना है कि फ्यूचर में क्या होगा. हमारे सामने जो मसला आता है, और हमेशा ही कहा गया है, उसी मसले को हल करो जो आपके सामने आ जाए. अब क्या मसला होगा आइंदा, हो सकता है कभी फुल कोर्ट होना, हो सकता हो जाए. तो जब वो मसला आएगा फिर आपको सुनेंगे कि फुल कोर्ट बैठना चाहिए, 7 मेंबर बैठना चाहिए, 10 मेंबर बैठना चाहिए, वो सारे बातें इशू खड़े हो जाएंगे. अभी तो फुल कोर्ट एक ही बैठी थी, मुझे जहाँ तक याद है, आपकी बात सही है, 2015 में 21वीं अमेंडमेंट की बात. उसके बाद तो फुल कोर्ट नहीं बैठी. तो ये आई है दूसरी दफा फुल कोर्ट तारीफ में. My answer to the question, this is one way of legislation is framed. The legislators are supposed to look at all eventualities and try as far as possible to cater for them. Now, it is so obvious that there is this defect in this law. Was it debated? Was it
thought about? Was there a thought process? And thereafter, it was drafted, keeping in mind कि जी full अगर court hearing करेगा तो उसकी appeal नहीं होगी. And if it was thought about it, why was it not mentioned in the My lord, my provision? response would be. So the obvious conclusion is that there is a flaw. And There is no the flaw flaw. is so apparent There is no that flaw. everybody can see it. No, there is no flaw. It's a self-contradictory question. When you say that there should be an appeal in the full court, no legislature in the world can provide an appeal Nobody to is the Supreme saying that there should be Court. an There can appeal. never in- be an appeal to the Supreme You Court. have actually There can misunderstood. never. It's a No, Mr. Siddiqui, self-contradictory the question. question is not whether there should be an appeal in the full court. The question is simply that how will this right of appeal be exercised if you cannot constitute a larger bench because you have been stopped from Appeal doing full so? court, मैं Which larger bench means पे that when a full court, if the committee decides, whereas in this case, where a full court is sitting, if this law is upheld, that there is no right of appeal. So the question is simply this, There that can never आपने be a खुद right of appeal. Oh, no, hold block on. कर दिया ना right of appeal. There is- What is the point of giving that जब right? कोई legislature There is- दुनिया का अपील दे ही नहीं सकता. There is 50 another, जज हो जाए. there is another aspect to it. But There I is come to the another 9 aspect. judges thing. You see- I'll come to Actually, that. there is no answer to this question. No, no, So there is an we answer. go around and put a full stop to it. कि जब full court में हम बैठ के, यानी कि